friends, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Anuradha and currently I am working in a management college. I have created this channel to teach you all various concepts of accounting and finance. So today let's start with the formation of journal entry, which is the base of accounting and without which you cannot have a good command over the subject. So simply journal entries can be defined as the date-wise recording of all the business transaction. So for that, first of all, you should have the knowledge of golden rules of accounting, according to which your accounts can be classified as classification of accounts. Okay. Your accounts can be classified as personal account and impersonal account, where impersonal account is further classified into two categories, that is real account and nominal account. So first of all, we should understand the meaning of personal account, real account and nominal account. So let's take all of them one by one. First, let's talk about personal account. Personal account, you can say. Personal account, नाम से ही पता चल रहा है, we are talking about a person. Okay. So whenever we talk about the personal account, it means we are talking about any person. Like Ram, Sham, Mohan, etc. So the rule of golden rules of accounting as per this account is debit the receiver, credit the giver. अगर आप रिसीवर हैं तो आप डेबिट होंगे, अगर आप गिवर हैं then you will be credited. Okay. Now real account. Real account is related to all those things which can be seen or touched, or you can say those things which have physical appearance, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, like your land, building, plant, machinery, cash. Suppose let's take example, अगर आप furniture खरीद रहे हो, तो you know the furniture is coming in and the cash is going out. Okay, so real account basically related with those things which have physical appearance like cash, bank, furniture, stock, land and building, plant and machinery, etc. And the rule for real account is debit what comes in, credit what goes out. If anything is coming in, then it will be debited, and if anything is going out, then it will be credited. Okay. Now the last is nominal account. Nominal account is related with all your expense and income. Like you have paid rent, you have paid salaries, you have paid interest, commission, or you have received any income in the form of dividend, in the form of interest, in the form of commission. So all these things get recorded in your nominal account like rent, wages, salaries, interest, etc. Okay. And the rule for nominal account is debit all expenses and losses, credit all gains and income. What does it mean? That if there is any kind of expense, then it will be debited, and if there is any kind of income, then it will be credited. Suppose you have paid rent. Okay, you are making payment. Rent is an expense for you, so rent will be debited.
Okay, but at the same time, if you are receiving rent from your property, now in this case rent will become your income. Okay, तो now it will be credited. तो आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि रेंट है तो वो हमेशा डेबिट होगा या हमेशा क्रेडिट होगा. दैट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर कि वेदर इट इज अ एक्सपेंस फॉर यू और इट इज अ इनकम फॉर यू. अगर वो आपका एक्सपेंस है देन इट विल बी डेबिटेड, और अगर वो आपकी इनकम है देन इट विल बी credited. So to have a better understanding of all these rules, let's take some examples. Suppose you have purchased furniture. Purchased furniture for rupees 10,000. Okay. Very simple journal entry I have taken. Purchased furniture for rupees 10,000. Now I hope you all are very well aware with the format of journal entry. For framing the journal entries, our format is journal entries. First of all, there is a column of date. After that, particulars, in which you will have to record your transaction. After this, LF. LF is the ledger folio. It means that where this journal entry has been posted to your ledger. कि ये जो journal entry आप frame कर रहे हैं ये आपके ledger के किस पेज नंबर पे पोस्ट हुई है, that you will have to mention here. Now, debit amount and credit amount. This is the format for recording the journal entry. Now we have taken the journal entry, purchase furniture for rupees 10,000. So सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि देखिए आपको पता है हर बिजनेस में आप हमेशा एक चीज पढ़ते हैं, for every debit there is a credit and for every credit there must be a debit. ठीक है, हर ट्रांजेक्शन का गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है. इफ यू आर गिविंग समथिंग देन डेफिनेटली यू मस्ट बी रिसीविंग समथिंग, एंड इफ यू आर रिसीविंग समथिंग देन obviously you are paying something for that, whether you talk about goods, whether you talk about services. तो here first of all you will have to see कि आपके पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, and to which account as per our golden rules of accounting it relates, वो कहाँ हमारा फिट होता है. So अगर suppose हम simply let's take example कि हमने फर्नीचर खरीदा है 10,000 रुपए का. ओके, तो हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट. अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम कैश ट्रीट करते हैं. अगर फर्नीचर आपके पास आ रहा है, कैश आपके पास से जा रहा है, तो बोथ दीज थिंग्स belongs to your real account because you can see furniture and cash, they both have physical appearance. So in this case your real account rule will apply. Debit what comes in, credit what goes out. So what is coming in here, furniture is coming in, so what we'll do, we'll debit the furniture account debit, and what we'll credit cash because cash is going out. एंड फर्नीचर के सामने फर्नीचर का अमाउंट एंड कैश के सामने यू विल हैव टू राइट डेबिट अमाउंट विल बी रिटन इन द डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट विल बी रिटन इन द क्रेडिट कॉलम. एंड फॉर द ट्रांजेक्शन you will have to give the narration that for purchase of furniture, this is the narration which you will have to give after every journal entry. Now let's take another example. Suppose, now let's take an example. Sold goods for cash
₹5,000। आपने 5,000 के गुड्स कैश में सेल किए। तो नाउ अगेन वील हैव टू सी कि आपका कौन सा अकाउंट इससे अफेक्ट हो रहा है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल में। हियर यू आर सेलिंग गुड्स, ओके, आपके पास से गुड्स जा रहे हैं और कैश आ रहा है। तो अगेन बोथ द थिंग्स हैव फिजिकल अपीयरेंस, तो बोथ विल रिलेट टू योर रियल अकाउंट, ओके। तो व्हाट विल बी द ट्रांजेक्शन, कैश इज कमिंग इन, तो कैश विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिट, and what is going out, goods are going out. So one thing you will have to keep in mind, whenever you are purchasing good, then you will have to pass it with purchase account, and whenever you are selling good, then you will have to open sales account for this transaction, okay. So here you are selling goods, so you will write, in spite of 2 goods, you will have to write 2 sales account. And what is the amount? Amount is 5,000. That will mention both the sides, and the narration will be for, or you can write being also, being goods sold, okay. Now let's take another example. Suppose you have sold goods on credit, then what will be the entry? Sold goods on credit to Ram for ₹15,000. Okay, you are selling goods to Ram for ₹15,000. Now, first of all, what you will have to see कि हमारे गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंगली ये किस अकाउंट से रिलेट करता है। यहाँ पे आप गुड्स सेल कर रहे हैं, यू आर सेलिंग गुड्स, बट कैश इज नॉट कमिंग इन स्पाइट ऑफ कैश आपका एक डेटर अराइज हो रहा है राम, क्योंकि डेटर ने राम ने आपको अभी पैसा नहीं दिया है, ही इज गोइंग टू गिव यू मनी इन फ्यूचर, ओके। तो राम आपका डेटर हो गया। अब आप इसको एंट्री कैसे फ्रेम करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स बिलोंग टू योर रियल अकाउंट बिकॉज यू कैन सी गुड्स, एंड राम इज अ पर्सन, ओके। तो राम पर्सन है, तो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट विल अप्लाई हियर। नाउ यू विल हैव टू सी कि राम आपका रिसीवर है या गिवर है, ओके। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली राम इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, और एज पर आवर रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हियर योर राम इज रिसीवर ऑफ गुड्स, तो व्हाट एंट्री यू विल फ्रेम? राम डेबिट टू व्हाट इज द अदर ट्रांजेक्शन। एक तरफ आपका राम रिसीवर है गुड्स का, एंड ऑन द अदर साइड गुड्स आर गोइंग आउट। तो आपकी इस एक ट्रांजेक्शन में 2 रूल अप्लाई हो गए, वन इज ऑफ रियल अकाउंट एंड द अदर इज ऑफ पर्सनल अकाउंट, ओके। तो एज पर आवर पर्सनल अकाउंट वी हैव ऑलरेडी डेबिटेड राम, सो नाउ व्हाट वी विल क्रेडिट? वी विल क्रेडिट गुड्स बिकॉज as per our real account, debit what comes in and credit what goes out, and here the goods are going out, and when the goods are going out, then we'll have to open sales account, okay. So we'll write to sales account, and the amount is 15,000, and we'll write the narration for goods sold on credit. तो इन दिस मैनर वील हैव टू सी कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कौन सा आपका गोल्डन रूल अप्लाई हो रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वील हैव टू फ्रेम द जर्नल एंट्री। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आई विल come with more transactions, okay. That's all for today. I hope you like this video, and if you like, then please subscribe, and please don't forget to press the bell icon. That's all. Thank you.